everyone. In this one, we are going to solve this problem 1835 maximum distance between a pair of values. So basically, in this question, what we have two arrays, okay, nums one and nums two, non-increasing, non-increasing both, okay, zero indexed means values are in a decreasing or constant way, not increasing. Okay, not increasing means if we have 55 here, after this index, we can have 55 again or a lesser value, right? Means after the 55, we will never get a value that is bigger than 55. Okay. Means if I have 30 here, so after this index search, okay, यहाँ पे after this one अपने पास सिर्फ छोटी या फिर 30 अगेन हो सकता है क्योंकि नॉन इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग मीन्स कि वैल्यूज यहाँ से बड़ी नहीं हो सकती, नॉट बिगर, इक्वल हो सकती है. So we may have duplicates as well. Okay, so this is the meaning of non-increasing. But after a index of a value, we cannot have a number that is bigger than of that number after that index. Okay, so this is nums one and nums two, and both are the same, non-increasing. Very good. What we need to find is the distance between a pair j minus I and valid pair की definition क्या है? So it is I and j should be greater or equals to I. Means कि हमें एक I यहाँ से पिक करना है. Got it? बहुत बढ़िया जी. हमें एक j यहाँ से पिक करना है. Okay जी. But हम वो पेयर वैलिड तभी मानेंगे, उनके बीच की डिस्टेंस तभी कंसीडर करेंगे जब जो मेरा j है that should be greater than or equals to I, and the value at jth index should also be equals or greater than value at ith index in nums1. J is for nums2, I for nums1. Got it? Mm, No, these are just the variables. You can take variables as your preference, but these are easy to take as well because these are very small variables. We can take them, right? So yeah, that's it. Let's try to understand how we can approach this problem. The very basic thing that comes in our mind, that we need to find something, we need to search something. Okay, so if I say what can be the maximum distance, if I take a number from nums1, what do I need in nums2? I need in nums2 is that, okay, from this index, whatever the value of this I, from that index to the last of the nums2, right? Is it? Is it? Whatever the index of the ith number in nums1, उस इंडेक्स के बाद या उसके इक्वल भी, again if I is 0, so we need to search from I zeros to the end of the nums2. Got it? That is there a number present? Is there a number present that is bigger or equals to this number? Means if I'm searching for 55, so I'm looking for 55 or greater number in this range. And what will be the range? Range will be from ith, let's say I is 2. So range will be 2 to the end of this nums2 array. Got it? If the index is 3, so that will be from third index to the last index of nums2. So starting index depends on where my I is. Okay, where my I is, because my j should be greater than or equals to I. So if my I is less than 3, I cannot start from 0, right? Because eventually if it is not valid. Because according to question, pair for needs to be valid, ना जो J है, that should be greater or equals to I, right? If we start thinking in very, like, straight and simple direction, so we'll take a number from here. We'll start a loop in this array that, okay, can we find a number which is equal to or greater than this number we are standing on? Yeah, that's very simple. So, yeah, I mean, this is the very simple and basic code we can think about. Okay, so let's try to do this. अपना global variable, दोनों की length. We'll start from this first array. We are searching on the second array.
there is no sense of starting it from zero because eventually it is not a valid case, right? And if we start from numbers of zeros, we have to put this condition as well that j is also greater or equals to I. Right? So there is no sense of it. Eventually वो सारे के सारे केस हमारे कभी valid होंगे ही नहीं, right? So start from I and check if nums2 of j is greater or equals to nums1 of I. If it is, then it is a valid pair. But wait, what about j should be greater or equals to I? Bro, we are starting from I. So basically, when we start from I, this first condition gets fulfilled automatically, right? We are never behind that. We are always equals or ahead of it, right? So first condition is always fulfilled by this loop, and second condition fulfilled here, and that's it. हमारी दोनों condition fulfill हुई. So this is a valid pair. So we'll compare our max distance, our global variable, with this distance. With this distance, we cannot just return this. We may have a better value in for the other numbers, right? So for this loop, we are picking every number from here, and in this one loop, what we are doing is we are checking in this whole array to find a number for this one. So eventually let's say if I'm standing on this position, so I will have to iterate from this to last. What are the lengths? 10 to the power 5. 10 to the power 5. This n, this is also approximately n. This is n square. क्या ये काम करे? नहीं, क्योंकि हमारे जो कंडीशन है डाटा 10 to the power 5. ओके, मतलब ये काम नहीं करेगा. यस, बिल्कुल काम नहीं करेगा. क्या हम बेहतर कुछ सोच सकते हैं? ठीक है, ठीक है. हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए. हमें मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए. Okay, means if this is 30 and let's say here I get let's say 40. Okay, this is 30 in index 1 and this is 40 at index 2. So is it a valid pair? Yes, it is a valid pair. Good. Then after this I'll check here. Let's say here number is 35. So this is 30 and this is 35. Okay, this is index 1, this is index 1 2 3. Is it a valid pair? Yes, it is a valid pair. So we'll update the distance. Let's say here we have 32. Here we have 32 or let's say 28. Okay. So this is not a valid pair. This is not a valid pair because the number at nums2 is smaller. So we cannot take this. It means what maximum distance I got for 30 is 2. Got it? At this, if it is a 35, can you think one thing and are we able to imagine that part? That eventually what we need is the maximum distance means जितना ज्यादा let's say this index is I, so from this I जितने ज्यादा दूर तक मुझे वैलिड आंसर मिलेगा मैं उसको अपना आंसर कंसीडर करूंगा. Means me the farthest answer from this index, the farthest valid answer from this index means eventually I'm taking the if I'm starting from this one, so I'm taking the last one, last valid answer, है ना. इवेंचुअली मैं उसी की बेसिस पे अपना आंसर कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे उसके पहले भी मिलता है तो वो आंसर मेरा यहाँ से जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा और वो भी अगर मेरा वैलिड आंसर है तो मेरा वो आंसर कंसीडर होगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए. ओके, मीन्स मैं सबसे दूर वाली डिस्टेंस ले रहा हूँ. यस, दूर मीन्स व्हाट? पीछे से क्लोज, इजंट? पीछे से क्लोज, right? So why I'm not starting the loop instead of I to n minus 1, n minus 1, right? And wherever I will find my first index, first valid index, I just compare the distance and break. Just think about it. You are going from here till the last. Is it okay? It is okay, but eventually you need to check till the last for every value because even if you get the answer at this index, you need to check further more because you need to get maximum distance and you can get right after in that first valid answer. So why we are not starting from the last?
and then we will find just the first answer that is valid. Let's say I get it at this point. So there is no need to check further. There is no need to check further because eventually अगर मैं इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ मिलता भी है, there is no use of it. मेरे को बड़ी distance चाहिए, right? So that's what exactly we are doing in our better code, you can say. By starting from the last, we are going till the I, and we are checking if the number is greater, then just compare the distance and break. No further checking for this particular I, this particular number I. Got it? Is it okay? क्या ये काम करेगा? क्या ये कोड बेटर है? यस डेफिनेटली ये बेटर है, बट क्या ये इनफ बेटर है? नहीं, डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नो. ओके. In the worst case, let's say this is 55, and here only we have 56. It will start from the last and it will come to the second last, or you can say second element, which is eventually again the n square. Okay, means this is also not okay. Sorry, I'm saying n square again and again, but n square means that distance of nums1 and distance of nums2 multiplication. Got it? So means m into n, and m into n can be up to 10 to the power 10 in worst case. Got it? So this is also not valid. Okay, okay. We should think something else. Let's analyze. We need to search a number in nums2 for every number in nums1. ओके, मीन्स हर एक नंबर हम यहाँ से पिक कर रहे हैं नम्स वन से, उसके लिए कोई एक नंबर हम सर्च कर रहे हैं नम्स टू में जो कि उससे बड़ा हो, और हम फारदेस्ट डिस्टेंस चाहते हैं. तो हमें वही है कि जो लास्ट में जितना लास्ट में आंसर वो चीज मिल सके हमें आगे उतना बेहतर. वेरी गुड. मतलब कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग? वी आर सर्चिंग इन अ रेंज, we are searching in a range, and range is sorted, and range is sorted. ओके, सर्च करना है, लीनियर सर्च काम नहीं कर रहा है. बाइनरी सर्च, यस इज इट? बट वेट, फॉर बाइनरी सर्च एरे तो सॉर्टेड होना चाहिए, तो ये है ना? यस इट इज अ सॉर्टेड एरे ब्रो, इट इज अ सॉर्टेड एरे. मींस यू कैन अप्लाई बाइनरी सर्च हियर. गॉट इट? So just we'll apply the binary search. What will be the starting and ending index? Starting index will be index of I, whatever the I is. Okay, let's say I is 2, so my starting index will be 2, and ending index will be the last index of the nums2 array. Nums2 array, not a nums1 array. Okay, because eventually I need to search on that space area. If I is, let's say, 1, so I need to search in this area. Got it? So that's what we are exactly doing in the next code. Let's see that one, bro. For every number we are applying binary search in this one. Left will be our that index I, and right will be n minus 1, the last index of second array. Second array, got it? Simple binary search. If left is less or equals to right, well then हम इसमें check करेंगे, mid निकाला, compare करा. Now think about it. If nums2 of mid is greater or equals to nums1 of I, क्या ये valid case है? हाँ जी. Okay, but wait, what about j should be greater or equals to I? Bro, we are we are starting from I, right? So that case is always valid, right? That is always valid. We just need to check that the number is greater or not, greater or equals to or not, right? If it is, it means this is a valid answer. This is a valid answer. So compare your distance, and we need the farthest index, farthest distance, right? So for that, we'll check, can we get our answer even more ahead of this, the farthest, even more far, right? Can we get this valid answer even more at more distance? Got it? So that's why we are doing the left equals to mid plus 1. Okay, this is a valid answer. चेक फर्दर कि क्या हम इस डिस्टेंस से ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं कि नहीं. ओके, इफ द initially my left was here and right was here, so we got the mid, and mid is, let's say, uh, this one. So we are checking if this is a valid answer, so check for
left equals to mid plus 1 from this one to this one. That's what we are doing. This is simple binary search, I guess, and इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, right? And then अगर ये वैलिड आंसर नहीं है, it means कि I need a bigger value it to be valid, right? So where are the bigger values? Bigger values are on the left side. So that's why we are doing. If this is not a valid answer, then go on the left side because eventually you will the bigger values. Got it? So that's how our binary search works. What will be the time complexity in the worst case? This is m means nums one length, and this is nums two binary search bar. Okay, this is m into log n, m into log n. This is it, I think, and this is most of लोगों के माइंड में ये चीज स्टार्टिंग में ही शायद आ गई होगी कि हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एरे सॉर्टेड है, which is a good thing. But it's my responsibility that I need to start from that very basic point because there might be a lot of students that जिनके लिए ये सोचना बहुत टफ रहा हो, मे भी बहुत से लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं. Got it? So for them, I started from this point, right? Like literally very basic thing, and then step by step, why binary search, how we can think about it. I just did that, and that's that's what our motive is about it. So wait, wait. Okay, this is our solution. ये accept होगा for sure, but but think about one thing in every question. Okay, wait. Before we proceed, I want to tell you guys one thing. All these codes in Java, C++, and Python, we have a link in the description, which is for platform. वहाँ पे आपको ये सारे कोर्स मिल जाएंगे सारी लैंग्वेजेस में और भी बहुत कुछ है. यू कैन check out all those things as well, and absolutely free, even no account sign up or login needed. Got it? So let's move ahead. Okay, now see, हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए ये एरे का सॉर्टेड होना मैंडेटरी था. ओके, क्योंकि हमें जिस सर्च स्पेस में अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करना है वो सॉर्टेड होना चाहिए, विच इज फाइन. ओके, बट आप एक चीज सोच के देखो, ये भी तो सॉर्टेड है, ये भी तो सॉर्टेड है. या क्या ऐसा कुछ बेनिफिट हो सकता है? अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि हमने सर्च स्पेस इसको माना था, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एलिमेंट यहाँ से पिक करें और यहाँ पे सर्च करें. यस, इट इज वैलिड, कोई इशू नहीं है, ये भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इशू नहीं है, बिल्कुल काम करेगा. हम यहाँ पे इक्वल्स और ग्रेटर फाइंड कर रहे थे, अगेन हम यहाँ पे उसका रिवर्स फाइंड कर सकते हैं, विच इज फाइन, जस्ट फाइन, डेफिनेटली फाइन. तो ये सोच के देखो, अप्लाई बाइनरी सर्च, एक एरे का सॉर्टेड होना इनफ था, दूसरा सॉर्टेड नहीं भी होता तो भी वो चीज ठीक थी ना, क्योंकि हमें इवेंचुअली उसके लिए हम उसमें एक एक करके एलिमेंट्स ही पिक ही तो कर रहे हैं, राइट? तो उसमें वो सॉर्टेड है नहीं है, नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, रैंडम है, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता. दैट्स हाउ आर दिस सॉल्यूशन वर्क्स, व्हिच इज फाइन. बट दोनों सॉर्टेड है तो क्या हम कुछ और बेहतर सोच सकते हैं? क्योंकि बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमारा एक एरे का सॉर्टेड होना इनफ है, पर यहाँ पे दोनों सॉर्टेड है. कैन वी थिंक समथिंग बेटर? कैन वी थिंक समथिंग बेटर? ओके, and here comes that, okay, whenever we have sorted array, we start thinking about two pointers technique. Got it? कैसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको क्या इमेजिन कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि हाँ यार, एक पॉइंटर ये यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, इवेंचुअली वी नीड द डिस्टेंस, राइट? लेट्स थिंक अबाउट इट. ओके, सी, हमें चाहिए एक ऐसा इंडेक्स एट नम्स टू जो कि जो नम्स वन है उसके ith से बड़ा हो और उसका वैल्यू भी बड़ी हो. Got it? Now think about this. Initially, let's say I is here and J is here. Got it? क्या J I के इक्वल या उससे बड़ा है? Yes, it is. It is. Right? क्या Jth की वैल्यू ith वैल्यू से बड़ी या इक्वल है? Yes, it is. It is. Means this is a valid pair
means this is a valid pair. So we can have the distance. We can have the distance j minus I here, j minus I here, j minus I here, and update with our global variable. Now think about it something. This is a valid case. Okay, means बिफोर दिस जे बिफोर दिस जे क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग है सोच देखना अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स होते लेट से दिस इज 100 एंड फॉर दिस 100 दिस इज अ वैलिड पेयर अगर इस 100 से पहले एलिमेंट्स होते तो उससे बड़े होते फॉर श्योर फॉर श्योर यस यस डेफिनेट डेफिनेट इट मीन्स कि अगर ये 100 से बड़े होते और 100 मेरा वैलिड पेयर तो 100 के पीछे के सारे नंबर्स भी वैलिड पेयर होते यस और नो यस और नो यहाँ पे अगर जो नंबर होते वो होते 101 या फिर 100 भी हो सकता है let's से हमेशा बड़ी होते यस और नो इससे बड़ी होते है ना मीन्स कि ये सारे के सारे नंबर्स वैलिड होते ओके फाइन पर क्या इस 100 के बाद भी नंबर्स वैलिड होंगे अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं then you are wrong you need to think again ओके 100 के बाद वैलिड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते ओके ओके मीन्स क्योंकि मुझे पता है 100 मेरा एक वैलिड आंसर है इसके बाद के जो नंबर्स हैं या तो वो 100 के इक्वल या उससे छोटे होंगे 100 मेरा एक वैलिड आंसर है अगर मैं 100 के राइट साइड में जाता हूँ तो या तो मुझे इक्वल या फिर छोटे वैल्यूज मिलेंगी तो क्या मुझे जाना चाहिए यस क्योंकि दैट्स व्हाट माय मोटिव इज दैट्स व्हाट माय मोटिव इज दैट्स व्हाट माय मोटिव इज ओके अगर मैं इसके राइट में जाता हूँ तो क्या उससे मुझे कुछ फायदा होगा यस क्योंकि आई आपका यहाँ पर है आई आपका यहाँ पर है और जे आपका अगर आगे जाता है तो इवेंचुअली आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू नीड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू नीड गॉट इट सो जस्ट इंक्रीज द जे okay so your j will come at this point your j will come at this point I can say right got it now check again is it nums2 of j is greater or equals to nums1 of I no this is not so now think about it if j is not a valid if j is not a valid case means this 20 is not a greater or equals to this 55 to this 55 so is there a case that I should go on the right of j for this I for this I think about it. अगर इस I के लिए ये 20 वैलिड नहीं तो 20 के बाद मुझे सारे के सारे नंबर या तो उसके इक्वल या उससे छोटे मिलेंगे अब ये 20 ही मेरा वैलिड आंसर नहीं है यही छोटा है तो उसके बाद तो सारे छोटे ही है तो मतलब मुझे इसके बाद इस आई के लिए इस आई के लिए मुझे इसके बाद कोई वैलिड आंसर नहीं मिलने वाला दिस इज फॉर श्योर इसका मतलब कि इस आई के लिए यही एक बेस्ट आंसर था और 20 मेरा इनवैलिड है तो उसके बाद के भी सारे इनवैलिड ही होंगे और इट मीन्स कि 55 का कोटा पूरा हुआ उसके लिए यही मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल थी जो हमने तक निकाली इट मीन्स कि मूव द आई इंडेक्स ओके इफ नॉट दिस देन ये नंबर है ना थिंक अबाउट इट ये नंबर छोटा था तो मैं इसमें भी अब एक छोटी वैल्यू की ओर जाऊंगा सो दैट मुझे ऐसा चांस मिल सके कि शायद ये वैल्यू से बड़ी हो विल मूव आर आई टू दिस 30 got it and that's what we are exactly doing here as well you can see this okay fine बहुत बढ़िया now we'll check again is it a valid uh, let's think about it nums2 of j is it a greater or equals to of nums1 of I no it is not means what I can say is this 20 is not valid for this 30 so is there a sense going on the right direction of it no because in the right direction we have only smaller or equal values है ना so it means अगर ये वैलिड नहीं है तो आगे जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है means I need more smaller value in the array first array so that we can get some valid answer got it now check for this one is 20 no but wait is this 20 is a valid answer
You will say, yeah, this value is bigger. This value is bigger. This value is this value is bigger. मैंने कहा fine जी, okay. Then we are checking the distance. What will be the distance? Can you think about it? This will be negative. This will be negative. तो ये हमारे आंसर में कभी आएगा ही नहीं. ये हमारे आंसर में कभी आएगा ही नहीं. Can you think of it? Can you think of it? क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है. तो हमें एक्स्ट्रा चेक्स की नीड नहीं, क्योंकि ये हमेशा जे मेरा छोटा इंडेक्स है, आई मेरा बड़ा इंडेक्स है, तो ये ओवरऑल वैल्यू आएगी नेगेटिव. और इसीलिए हमारे ऐसे ये वेरिएबल में कभी आएगी ही नहीं. ये चेक हम जरूर कर रहे हैं, बट ये कभी अपडेट में नहीं आई. नॉट इट, बिकॉज द डिस्टेंस इज नेगेटिव. ऑटोमेटिकली वो डिस्कार्ड हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है. नॉट इट. तो ये वैलिड नहीं है, इसीलिए ये कभी यहाँ पे अपडेट भी नहीं हो पाएगा. Got it? Means we will, okay, we got the answer. Now we need the as uh, as far as possible. So we'll shift our j. We'll shift our j here. Is it a valid answer? Yes, it is. Then again, take the difference of them. Now this is a valid answer as well. So distance is zero. It can be updated. It can be updated. Okay. For this, now again we have a valid answer. So we'll move our j again. J again. Is it a valid? Yes, it is a valid. Then update our distance again. Update our distance again. Got it? Now, is it a valid answer? Yes, it is a valid answer. It is a valid answer. Update our distance again. Update our distance again. Because remember, we need the equal or greater, not always greater. Even if it is an equal value, then also it is fine. Okay, so that's what maximum distance we'll get from this point. This is how our two pointer works. I hope this is clear. I hope this is clear. You just need to think. और जो वो इनवैलिड जो केसेस हैं कि जे मेरा छोटा है आई से, वो अपने अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव देगा, ये नेगेटिव देगा. एंड दैट्स व्हाई वहां पे कभी वो चीज अपडेट ही नहीं हो पाएगी. गॉट इट? सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी हियर. वी आर इनिशियली टेकिंग द डिस्टेंस एट जीरो, सो दैट इन फ्यूचर इफ जहाँ पे कोई एक नेगेटिव आती है वैल्यू, तो वो कभी हमारे आंसर में आएगी ही नहीं, क्योंकि जीरो तो हमेशा एक नेगेटिव नंबर से उससे ग्रेटर ही है. राइट? तो इसीलिए वो कभी केस यहाँ पे इंक्लूड होगा ही नहीं. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. कोई भी एक एरिया एंड होता है, तो हमारा वहीं पे सर्चिंग वाला प्रोसेस एंड हो जाएगा. एंड इफ इट इज अ वैलिड, देन अपडेट योर डिस्टेंस एंड चेक फर्दर डिस्टेंस, क्या और बेहतर डिस्टेंस पॉसिबल है. अगर ये वैलिड नहीं है, तो हम एक छोटा नंबर जाएगी अपने नंबर वन में, एंड देन विल check for that number as well. Got it? So that's what our most optimal codes comes here. And what is the complexity? In the worst case, m plus n. In the worst case, m plus n. You say, okay, m plus n, bro. Wait, this is m into n. This is m log n into log n. This is plus. Okay, so when I say m plus n, means the bigger m or n will be the exact complexity. If m is bigger, then complexity will be, or you can say like considered will be m. If n is bigger, then n. So it is m plus n. And I hope आपको पता होगा कि m plus n बहुत ज़्यादा better है as compared to all these things, all these codes. Okay, so that's what for this question. That's for what for this video. I hope आपको समझ आया होगा. बहुत प्यारा. Thank you so much for watching. See you in the next one.